Hello friends, welcome to Bankers Platform. Today we have come again with new set of questions for JIB exam and our subject is accounting and finance for bankers. So friends, today we will be discussing memory recall questions which have come in the previous exam and some most expected questions also which will be very helpful for you in the coming exam. So I hope so friends you all are preparing well for the coming exam because two exams you are going to take. One is legal and another is accounts. So friends, let's start the session with our first question. So first question is, the promoter of a business is treated as a creditor of the business. Accordingly, which of the following concepts of accounting? And our options are entity concept, money measurement concept, dual concept, cost concept. So friends, as you know, लाइक जो प्रमोटर है बिजनेस के उन्हें हम क्रेडिटर्स मानते हैं बिजनेस के. सो उसमें हम कौन सा अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है, एंड दैट इज A. The right answer of this question is A, and it is entity concept. So friends, entity concept जो है वो बताती है कि एक जो बिजनेस है, एक कंपनी और एक उसका जो डायरेक्टर है या उसका जो प्रमोटर है, दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट एंटिटी. और इस तरह से फ्रेंड्स ये जो एंटिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, like going concern, gone concern. So these type of questions are asked and it can give you 1 to 2 marks in your coming exam. So be prepared with this one. Okay. So let's go. Next question is, a firm raised a loan from a nationalized bank. Such loan account would be classified under which of the following accounts? So our options are personal account, nominal account, real tangible account. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि अगर एक फर्म है उसने लोन लिया है बैंक से, तो उस बैंक को हम किस टाइप के अकाउंट में कंसीडर करेंगे. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज पर्सनल अकाउंट. Okay, let's move to next question. Question number 3. Which of the following purposes is served by preparation of trial balance by a business organization? तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर ट्रायल बैलेंस बना रही है तो ट्रायल बैलेंस बनाने से उनका कौन सा पर्पस सॉल्व होता है. ऑप्शंस आर लोकेशन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, location of error of omission, location of clerical error, all the above. Let's see what is the correct answer of this question. And the correct answer is C, that is location of clerical error. जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमें जो क्लैरिकल एरर्स हुए हैं उनके बारे में पता चलता है. लाइक if figure will not match, so in that case you can फाइंड आउट दैट थिंग इन द ट्रायल बैलेंस. वो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं उस टाइम हमें क्लैरिकल एरर के बारे में पता चलता है. एंड लोकेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन. सो ओमिशन अगर कोई चीज ऑमिट हो चुकी है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. ओके, एंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड देयर. सो मेन इज लोकेशन ऑफ क्लैरिकल error. Let's move to next question. Question number 4. Which of the following would be considered as a source of funds for a business firm engaged in मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई बिजनेस फर्म है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एसेट है या लाइबिलिटी है जो सोर्स ऑफ फंड मानी जाएगी. अवर ऑप्शंस आर इंक्रीज इन एन एसेट, increase in liability, decrease in liability, none of the above. And the right answer of this question is B, that is increase in liability. अगर किसी भी फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है that means they are getting, that is a source of fund, they are getting fund because जहां से भी वो फंड ला रहे हैं वो उनकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. Let's move to next question. Question number 5. The books of a firm reflect that the returns inward have been added short by rupees 9 1980. Presently, its gross profit is 38,200. What it should be? So यहाँ पे आपको बताना है कि वो क्या होनी चाहिए. बुक की जो फर्म है वो रिटर्न इनवर्ड हैव बीन एडेड शॉर्ट. तो जो रिटर्न है इनवर्ड की वो शॉर्ट है 1980 से, और प्रेजेंटली जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 38,200.
200। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो करेक्ट, अगर हमें पता चल जाए ये एरर, तो वो कितना होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। आवर ऑप्शंस आर 38,200, 40,180, 38,220, 37,640, and the right answer of this question is C, that is 38,220. So this will be the right answer. Let's move to next question. Question number 6. Question number 6. The closing stocks of a goods are recorded in which of the following books of a firm? तो जो भी फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं वो हम कहाँ पे फर्म के किस पार्ट में लिखते हैं? अवर ऑप्शंस आर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So the right answer of this question is C, that is trading account and balance sheet. तो इसमें जो है हम closing stocks mention करते हैं, record करते हैं. So see, balance sheet, trading account, these topics are very easy. Once you will be thorough with these things, it will be very easy for you to get good marks, because these small topics, they can give you 3 to 4 marks in your exam. So please learn the things by heart so that in exam you can mark the right answers of the question. Let's move to next question. Question number 7. A company issued fully paid up shares of rupees 10 each at a premium of 2 to the vendor of plant and machinery worth 33,60,000. What is the number of shares that has been allotted to the vendor? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेंडर को कितने शेयर अलॉट हुए होंगे. सो यहाँ पे फ्रेंड्स यू हैव टू कैलकुलेट. So pause the video, calculate these figures, and then come to the answer of the question. And the right answer of this question is C, that is 30,000. So 30,000 जो है शेयर्स अलॉट किए गए हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, a company declared a dividend of 10% on its paid up share capital but failed to account for this transaction in its book. It will be treated as an error of omission, error of principle, clerical error, not required to be accounted for. तो यहाँ पे जो कंपनी उसने डिविडेंड दिया है 10% अपनी पेड अप शेयर कैपिटल पे, और वो उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं अपनी बुक्स में, तो उसे हम किस तरह ट्रीट करेंगे? इट्स एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर, या नॉट रिक्वायर्ड टू बी accounted for. And the right answer of this question is A, that is error of omission. Omission means when something is not done, means वो omit हो चुका है. So here it will come error of omission, right answer. Let's move to next question. Question number 9. Under which of the following methods of accounting the prepaid expenses or outstanding income is taken into consideration for determining profit or loss to a business? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग. तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम को भी अगर कंसीडर करते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए, तो वो कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है? एंड द राइट अवर ऑप्शंस आर mercantile system, single entry system, double entry system, cash system. And the right answer of this question is A, that is mercantile system. So as per mercantile system rule, जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसे भी हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. प्रीपेड एक्सपेंडिचर इज शोन एज एन एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम. तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एसेट. प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह का एसेट है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. So question number 11 is, a firm gives certain goods out of its available stock at charity to an institute for blind. What will be the journal entry? तो इस केस में journal entry क्या होगी?
Our options are debit institute credit cash, debit sales credit cash, debit charity account credit purchases, debit purchases and credit cash. So let's see what is the right answer of this question. And the right answer is C, that is debit charity account and credit purchases account. So let's move to next question, question number 12. A sum of rupees 786 has been entered in the sales book as rupees 678. This would be considered as an error of, तो इसे हम फ्रेंड्स किस टाइप का एरर कहेंगे? Our options are error of principal, error of commission, error of omission, compensating error. So let's see what is the correct answer. And the right answer is B. That is error of commission. तो इस error को हम कहते हैं error of commission. Let's move to next question. Question number 13. The goods purchased by a firm are debited to purchase account. Which of the following category दिस अकाउंट वुड बी कैटेगराइज? तो जो गुड परचेज किए हैं फर्म ने वो डेबिट हुए हैं परचेज अकाउंट से, तो इस अकाउंट को हम किस में कंसीडर करेंगे? दैट इज परचेज अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कंटीजेंट अकाउंट. And the right answer of this question is B, that is real account. So purchase account is a real account here. Okay, let's move to next question, question number 14. In balance sheet, amount of total asset is 10 lakh, current liabilities rupees 5 lakh, and capital and reserves rupees 2 lakh. What is the debt equity ratio? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है. एंड pause the video friends and solve this question so that you can come to the right answer of the question. So friends, I hope so you have solved this question. So let's see what is the correct answer of this question. And the correct answer is B. That is 1 1.5 is to 1. So this is the right answer. So friends, debt equity ratio, current ratio, uh, डेट इक्विटी रेशियो, डीएससीआर, तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल. एंड समटाइम दे विल आस्क यू डायरेक्ट व्हाट इज द फॉर्मूला और हाउ वी कैन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो. तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 to 5 marks, 4 to 5, you can say 4 to 5 marks are asked from these type of topics: current asset, current liability, current ratio, okay, debt equity ratio. So you should prepare these different ratios also for your coming exam, because these ratios are coming every time in the exam and it will give you 4 to 5 marks. So let's see the calculation of this question. That is, one second friends, we have the solution here. Okay, let's see one solution. Okay, for solution, long term debt, that is 10 minus 5 plus 2 is equal to 3 lakh. So in this way you have to get, because debt equity ratio का जो फ्रेंड्स फॉर्मूला है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ. तो आपको सबसे पहले टेंजिबल नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म डेट जो है वो फाइंड आउट करना होगा. एंड लॉन्ग टर्म डेट आपको फाइंड करने के लिए 10 minus 5 plus 2 करना होगा, then you will get 3 lakh. And after that capital and reserve, so that is tangible net worth, okay, that is 2 lakh. So accordingly you can calculate the figure and this is the answer. So friends, here this is a look of a balance sheet. तो ये friends balance sheet है जिसमें assets assets are written on the left side and the liability on the right side. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी चीजें कहाँ पर आती हैं. लाइक एसेट, एसेट में सबसे पहला आपका करंट एसेट, और करंट एसेट में क्या चीजें आती हैं? दैट इज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो कई बार फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर प्लेस्ड वेयर इन द बैलेंस शीट. तो अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह याद है, देन यू कैन से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर placed in the current asset of the balance sheet. In the same way,
The question can be asked intangible asset, where we consider intangible asset. तो जो intangible asset है वो हमारे fixed asset में count होते हैं. So please go through this all and learn it by heart. लर्न इट बाय हार्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर. ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एसेट. एसेट कितने टाइप के होते हैं? करंट एसेट, फिक्स एसेट एंड अदर एसेट्स. एंड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट एसेट में कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. और फिक्स्ड एसेट जो है वो है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ओके, and less depreciation, less accumulated depreciation that you have to consider, and intangible assets. Now other assets में आपका आ सकता है deferred income tax. Okay, and here in the liability part में हमारी जो current liability है उसमें है हमारे accounts payable, short term loans, income tax payable, accrued salaries and wages, unearned revenue, current portion of long term debt. and current liabilities जो है हमारी ये होंगी. एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे लॉन्ग टर्म डेट, डेफर्ड इनकम टैक्स. ओके, एंड ऑनर सिक्योरिटी में ऑनर्स इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन अर्निंग. तो ये जो है इसके पार्ट्स हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन कुछ रेशियोज हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में. इट इज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स. सो दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, debt ratio, that is total liabilities divided by total asset. Current ratio, current asset upon current liability. Working capital, current asset minus current liability. Asset to equity ratio, total asset divided by owners equity. Debt to equity ratio जो अभी हमने फ्रेंड्स सॉल्व किया, debt equity ratio, that is total liabilities divided by owners equity. तो friends, please go through these all things and remember these things because direct questions can be asked from balance sheet. Okay, so let's move to next question. Question number 15. Fire destroyed stocks worth rupees 3 lakh of a firm. An insurance company admitted a claim of rupees 2.5 lakh, to which account the balance amount would be debited. So our options are stock account, insurance receivable account, profit and loss account, trading account. And the right answer of this question is C, profit and loss account. Because जो फ्रेंड्स जो सेटलमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी ने किया दैट इज ऑफ 2.5 लाख, और जो बैलेंस अमाउंट है हमारा 50,000 रुपीज, वो हम कहाँ से लेंगे? दैट वी विल टेक फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is some rent is due but not paid by the firm in the balance sheet. So where it will be show, what it will show? It will show nil balance, it will show debit balance, it will show credit balance, none of the above. And the right answer of this question is C. It will show credit balance. वो credit balance show करेगा. Okay. Rent due but not paid. Let's move to next question. Question number 17. In the passbook of the bank account of a firm, the balance is rupees 10,000 and it is observed that the bank has credited rupees 40 as interest. With a view to reconcile the passbook and cash book, the said amount. So what we will do in this case, our options are A, will be added to the cash book account, will be deducted from passbook balance, will be added to the passbook, A or B. So let's see friends, what is the correct answer. So let's see what is the right answer of this question. And the right answer of this question is A. It will be added to the cash book. तो ये जो है हम cash book balance में add कर लेंगे. Let's move to next question. Question number 18. What kind of account is a trial balance? Real account, personal account, nominal account, list of balances in various account. And the right answer of this question is D. Trial balance is nothing but list of balance in the various accounts. So let's see question number 19. The passbook of current account of a firm has been showing a balance of 1 lakh. It is observed that bank had paid fee of
3100 directly to the debit of account of the firm as per a standing instruction. What will be the balance as per cash book? तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स? सो आवर ऑप्शंस आर ए 96,900, बी 97,000, सी 1,31,100, डी 1,24,100. So the right answer of this question is A, that is 96,900. Let's see next question. Question number 20. As per going concern concept, how the business is viewed. तो फ्रेंड्स जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि जो बिजनेस है उसको हम किस तरह व्यू करते हैं. बिजनेस इज हैविंग indefinite life, business is having limited life, business is run with uncertainty, business would run long for a very long period. So let's see what is the correct answer of this question as per going concern concept. And the right answer is A, that is business is having indefinite life. So friends, this is a set of 20 questions and I hope so you are benefited from these questions. So friends, these questions are like a part of a revision for you because you are studying, you are doing the self study and you are studying yourself. And when you study and when you do these type of different questions from the various topics, so your preparation gets revision and you also understand that how much you have learned and how much you can score in the coming exam. So thank you friends. Thanks for watching the video and I hope so you are benefited from the video. So please like the video if you are benefited and share this video with your friends who are preparing for JIB exam and subscribe to our channel if you have not subscribed and press the bell icon to stay updated. So thank you friends. Thanks for watching. Have a nice day.